Basdeep Panda. Welcome to Master English. Let's English पढ़िवा subject. कारण I have neglected this subject, but especially because because I am the teacher of English, na. That's why. So whatever it may be. आज आमे SMF live पढ़िवा. SMF live रा जीतो का प्रश्न सेटा think it out रो question हो कि माने probable passage गुडी कर question हो. ये question गुडी को सीधा सीधा निज भाषा रे केमते लिखिबा आउ ता उत्तर गोटे थर केमते पाठ को बुझिबा केमते मन रखिबा पूरा डिटेल्स रे. ओके बेसी समय लागोनी बेले बहुत जल्दी सरीबो. ओके तो वीडियो को निश्चित भाबे क्लास शेष पर्यंत देखिबा पेन एंड पेपर रेडी करी. प्रथम प्रश्न तो प्रथम ये होची हमर कोन प्रथम जो पैराग्राफ टा नि आइछि से हम अप्लाई. Tell me, not in one full number, life is but an empty dream, for the soul is dead, that slumber, things are not what they seem. Life is real and life is earnest, and the grave is not its goal. Dot the art to dot the return it was not spoken about the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end way, but to act that is tomorrow finds us further than today. ये होची passage नहीं तो यार question प्रथम question हम जो देखिबा प्रथम what do the pessimistic people say about life? What do the pessimistic people कहले negative people कहि पार तमे जीवन विषय रे से माने कोन कहंती सो से माने तांकर व्यू कोन जीवन ऊपर तांकर व्यू कोन उत्तर कोन हबो पिले God bless Moichen. Uttara uchi the pessimistic people pile half of the question, half of the answer. This is the technique. Half of the question and half of the answer. So the pessimistic people say that life is nothing but an empty dream. Simple. The pessimistic people say that life is nothing but an empty dream. Second question. Second question, what is life according to the poet? Kavi ko anusar जीवन टा कौन? Life is an empty dream का ना. Yes बेटा. The second question is what is life according to the poet? Second question. The उत्तर को हम बोले according to the poet life is earnest, life is real. According to half of the answer, half of the question. नहीं. So according to the poet life is real, life is earnest. बहिरु उत्तरिबा मोते लेखि आसु नै मोर मु जो प्रथम माने सेशन करतली मु सेठी कहतली मोर जो मार लेखि हो नै मु कोन करबी तो मु पैसेज रु भी उत्तरिबार अछि केमती उत्तरिबी मु सेही हिसाब रे तुमको प्रश्न सब रो उत्तर कहूची बिले. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल. तापर जीवा में थर्ड क्वेश्चन डस्ट दो आर्ट टू डस्ट दो रिटर्नस्ट एक्सप्लेन. डस्ट दो आर्ट टू डस्ट दो रिटर्नस्ट माटी रु आस माटी को फेर जीव याको विश्लेषण करो. So dust the art, dust the returnest. It says that it said that life is created from dust, and after death, life will mingle in dust or return to dust. Life is created from the dust. Life will return to the dust. Simple. This is the meaning of what to dust the returnest. You are dust and to dust the returnest. Next question, how can you make life beautiful? Radhe Krishna, Radhe Krishna. Next question, how can we make life beautiful? Ame jibon taku kibhali sarasa sundar kari pariba. How can we make life beautiful? Okay. So what would be the answer? We can make our life beautiful. We can make our life beautiful by doing noble work. Nahi. By doing noble work, so that is tomorrow will find us further than today. So that is tomorrow will find us further than today. भलो काम करी कि जीवन टा को महान करी परिबा जा फल रे हमें हमर फ्यूचर रे आज जो जगह रे अछि फ्यूचर रे ताठारु भल जगह रे थिबा हम समझते. शेष क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट लाइफ्स वे? जीवन रो रास्ता कोन नुह? व्हाट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ? What is not life's way? जीवन रास्ता कोटा नो पिले. तो उत्तर कौन हबो exactly? What would be the answer? The answer would be we can make life, the way of life is not enjoyment. The way life, not enjoyment, not sorrow is our destined end or way लिखाई छै kana? Not enjoyment or not sorrow is our destined end or way लिखाई छै ना? तो सही ऊपर ई प्रश्नटा अछि. तो यार उत्तर को हबो उत्तर हबो exactly. So the way of life is not enjoyment, not sorrow. So the way of life is to work honestly, to act honestly. Honestly हमें काम करबा ये होची जीवन रो रास्ता रो खा. ओके ये थिला
प्रथम पैसेज पांचटा प्रोबेबल प्रश्न एवं तार उत्तर आम वर्तमान जीवा द्वितीय पैसेज ऊपर द्वितीय पैसेज रे कोन अछि आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग art is long and time is fleeting and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave in the world's broad field of battle in the bivouac of life be not like dom driven cattle be a hero in the strife trust no future let the dead past bury its deeds naiki and act in the living present act in the living present heart within god is over heart within god is over हृदय सहित काम करवा यार क्वेश्चन कौन रहा पे क्वेश्चन मुझे कहीदे आगे what are the poets say about art and time question number 1 number 2 what are the he say about the hearts हृदय विषय कौन कहते number 3 why should not we trust future कहीं आम फ्यूचर को ट्रस्ट करवा नहीं number 4 how can we best utilize present को केमती यूटिलाइज करिबा नंबर 5 व्हाट आर द पोएट एडवाइस पीपल इन द सेकंड स्टैंजा रे लोक मान को कवि कोन माने उत्तर दैचंती प्रथम प्रश्न व्हाट आर द पोएट से अबाउट आर्ट एंड टाइम विषय रे कोन कहिचंती कवि उत्तर कहबो द पोएट सेज मु कहूची अबे केमिति स्टैंजा देखि कि उत्तर लिखो सी जिंस तो लिखाला the poet says that art is long but time is fleeting. The poet says that art is long and time is fleeting. Poet अछि तमरा art is long and time is fleeting. सीधा मु कहूची मु पैसे देखि करी उत्तर केमते लिखिबा पले मु सही जिंस कहूची the poet says that art is long and time is fleeting. मु मो मनुरु किछि कहू नै बहिरु जा अछि बहिरु बुझियला बहिरु तम माने +2 लेवल रे पिला बहिरु केमते पैसे देखि केमते लिखिबो एटी सही कथा पड़ी मु इंग्लिश रे पीजी कली देयर आफ्टर एमफिल कली मु केमते लिखिबी तमे केमते लिखियो ता ऊपर से भीतर डिफरेंस अछि तो आमे समस्त केमते लिखि परिबा डायरेक्ट पोएम को कॉपी करके केमते लिखि परिबा सही कथा एठी पढि जिबले नंबर 2 क्वेश्चन व्हाट डज ही से अबाउट द हार्ट्स सो व्हाट डज ही से अबाउट द हार्ट्स हृदय विषय से कोन कहि छंती ही से दैट तो उत्तर केमते लिखिबा प्रेजेंट टेंस रे अछि प्रेजेंट टेंस रे उत्तर लिखिबा he says that hearts are like muffled drums beating funeral marches to the grave so he says कवि कहिसंती जे he says that funeral marches are beating or muffled drums are beating funeral marches to the grave muffled drums are beating funeral marches to the grave सीधा वही उत्तर लिखिबा 2 मार्क पाइबा पले this is the technique that to be followed This is the technique that to be followed. Question number 3. 3 number. Why should not we trust future? आमे फ्यूचर को कहीं की भरोसा करिबा नै. Why should not we trust future? We should not trust future. Question half of the question, then half of the answer. We should not trust future because though it looks pleasant, it is uncertain. Because it is uncertain. Simple लिखि परिबा because it is uncertain. कारण यह अनिश्चित future टा निश्चित न है so we should not trust future because it is uncertain नहीं because it is uncertain okay question number 4 कोन so how can we best utilize present को की भली आमे best utilize करि परबा बहुत सुंदर भाबे की भली utilize करबा ताले कोन हो पिले doing good work for the people around us so we can best utilize our present doing good work for the people around us आम कड़े थिबा आम पार्श्व थिबा लोक मानन पई भलो काम करिकि हित काम करिकि आम प्रेजेंट को भलो यूटिलाइज करि परिबा बिकॉज़ दिस इज द सोल गोल ऑफ आवर लाइफ सेति भाई भगवान हमको मनुष्य जन्म दैचंती 5 नंबर प्रश्न बेले व्हाट डज द पोएट एडवाइस पीपल इन द सेकंड स्टांजा रे कवि कोन कहिचंती बी ए हीरो इन द स्ट्राइप जो लिखायला बिले तो कोन कहिचंती बिले द पोएट एडवाइजेस पीपल इन द सेकंड स्टांजा नॉट टू बी लाइक डम ड्रिवन कैटल गाय गुरु भलिया हो नाही पशु भलिया हो नाही बोली कवि उपदेश दैचंती and driven cattle but to be a hero in the strife but to be a instead he advised to be a hero in your life जीवन रे गोटे हीरो भलिया जीवन यापन करिवा पे से कहिचंती ये थिला 2 नंबर
2 नंबर है या पर आमे जीवा 3 नंबर पैसेज को थर्ड पैसेज को जीवा थर्ड पैसेज रे कोन छिले lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leaves behind us footprints on the sand of time footprints that perhaps another's selling over lives solemn men a forlorn and shipwrecked brother sing shall take heart again let us then be up and doing with a heart for any fate still achieving still pursuing learn to live and wait this is the last area last part तो एथिरे हमर जो प्रश्न सब रहिला पहिले मु प्रश्न गुडी को कहि दउछि प्रश्न नंबर 1 व्हाट डू लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस बड़ लोक मन कर जीवन हमको कोन कहे क्वेश्चन नंबर 2 हाउ कैन सॉरी व्हाट शैल वी लीव बिहाइंड व्हाइल डिपार्टिंग जतोल जिब्बा हमें जतोल जिब्बा जीवन हमर जीव मरिबा हमें कोन छाडी के जिब्बा क्वेश्चन नंबर 4 हाउ कैन द फुटप्रिंट्स हेल्प अदर्स पाद चिन्ह केवल किभଳି अन्य को साहाय्य करिवो नंबर 4 व्हाट द पोएट एडवाइस पीपल एट लास्ट कवि कौन एडवाइज करिसंती शेषरे नंबर 5 व्हाट यू मीन बाय फॉरलन एंड शिपरेक ब्रदर कहले तमे कौन बुझुछ ये होची पंद्रह प्रश्न उत्तर प्रथम प्रश्न थिला कोन बिले व्हाट डू लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस बड़ लोक मानकर जीवनी हमको कौन सोचाई थाए तो उत्तर को हम बिले लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड दैट वी कैन मेक आवर लाइफ सब लाइन बहिरु सीधा उतारी देरी मो So lives of great men all remind us that we can make our life sublime. संपूर्ण 2 मार्क पाइबा पे पिले संपूर्ण 2 मार्क एतरे गोटे मार्क भी कटिबो नै बट मु पैसेज रु उत्तर देछि सीधा ओके क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट शैल वी लीव बिहाइंड व्हाइल डिपार्टिंग बुझिला व्हाट शैल वी एग्जैक्टली लीव बिहाइंड व्हाइल डिपार्टिंग गला बेले हमें पछरे कोन छाडी के जीवा सो व्हाइल डिपार्टिंग वी कैन लीव behind footprints on the sand of time. So while departing, we can leave behind footprints on the sand of time. Yes, Kana. Yes. Next question देखियो अबले. Next question दिला how can the footprints help others? How can the footprints help other? अन्य मान को है किभଳି help करिवो? How can the footprints help other? So the footprints shall help the forlorn and shipwrecked brother to take heart again. The footprints will help the forlorn and shipwrecked brother to take heart again. पुडी थरे माने मनोबल पाइबा पई पुडी थरे काम करिबा पई सेवन को प्रवर्तैबो बुझिला सीधा सीधा कहलिबा प्रश्नर उत्तर बहुत सहज लिखिबा पैसेज भितर लिखिबा ये होची से प्रकार टेक्निक बिले ओके शेष प्रश्न देखिबा शेष प्रश्न अछि व्हाट डू यू मीन बाय forlorn and shipwrecked brother What do you mean by forlorn and shipwrecked brother? Forlorn and shipwrecked brother कहले कोन पेले What do you mean by this? तो एठी कोन हो उत्तर So forlorn and shipwrecked brother means one who was failed in life. One who was failed in life and is distressed at his own moral and material, ruin. So you can simply write forlorn and shipwrecked brother means one who was failed in life. जे जीवन रे फेलुअर सामना करछि से होछि फॉरलन एंड शिपरेक्ड ब्रदर वन वाज फेल्ड इन लाइफ एंड इज डिस्ट्रेस एट हिज ओन मोरल एंड मटेरियल रुइन बहुत बढ़िया काना बहुत बढ़िया वेरी गुड ताले पिले आमे जदी वर्तमान आलोचना करबा को जिंसडा थिंक इट आउट ऑफ क्वेश्चन आंसर जदी देखिबा क्वेश्चन आंसर आलोचना करबार किछ आवश्यकता नै तमे समझे क्वेश्चन आंसर सारी देथिबो तो ये थिला प्रोबेबल पैसेज आउ तार टेक्निक हमें केमती करिबा कोन करिबा पिले कोन केमती करिबा एक्चुअली उत्तर केमती परीक्षा लिखिबा तो ताकू नै कि सेशनटा थिला पोएम भितरु जदी ए भलिया प्रश्न आसे सीधा प्रश्न आसे सीधा उत्तर केमती लिखिबा ओके आसन देखले आ गुटे चैप्टर इंग्लिश रा कंटीन्यूअसली वर्तमान क्लास अब 8टा बेले क्लास होउची जो माने जॉइन करने क्लास सब फटाफट जॉइन करबा संग साथी कहि दबा अबे कंटीन्यूअसली क्लासेस विल बी देयर अंटिल एक्समास हॉलिडे मोर अलगा प्रोग्राम अछि अलगा रे जीवार अछि बट वर्तमान 20 तारिख पर्यंत ये कंटीन्यूअस चलिबा क्वेश्चन से आलोचना करिबा सोमरजन ठीक अछि ओके एज यू विश ठीक अछि क्वेश्चन से जदी आलोचना करिवार अछि ताल कर दोछु सो डॉट द टाइटल सजेस्ट दैट द पोएम इज अबाउट प्रथम प्रश्न ओके सम्य कर दोछु So does the title suggest what the poem is about? तो ये जो लिखाई छी ए कविता जो लिखाई छी एटा कोन सजेस्ट करूची यस यार उत्तर होची यस
Yes, no question. So yes, the title suggests the poem is about lesson of life. Yes, the title suggests that the poem is about lesson of life. Yeah. Question number 2. It is the echo number. 2 number कौन सी? What do the poets say about life in the first stanza? कवि प्रथम stanza रे जीवन विषय कौन कहते? प्रथम stanza रे. The poet says life can be empty dreams, souls can be dead, and at last he emphasized that things can be unreal in the first stanza. कथा क्लियर? So कौन कौन कह जाइछि? Life is not an empty dream. प्रथम जिंस मन रखिबा. So life cannot be an empty dream. Life is not an empty dream. Getting me? And souls cannot be dead. जीवन मृत नुह माने मनुष्य बंची माने से मृत नुह से एक्टिव हवा को पड़िबो ताको. Getting me? And he emphasized that things can be unreal. Things can be unreal. कोन जिंस गोटे unreal हेई पारे. Okay. Number 3 जीवा. What does the poet mean by life is real, life is earnest? Life is real, life is earnest कहले तमे कोन बुझछो यार कवि इनका भाषा रे या कोन से कहबा पे चाहतो. So the line life is real, life is earnest. ये जो कुआ गला means that life is full of practical and real values. Life is full of practical and real values. बुझेला? Life is full of practical and real values. Life is real, life is earnest also. What is the poet's observation on the soul? कविंका भाषा रे soul उपरे कविंगर मतामत कौन? The poet has observed that. The poet has observed that. So, soul cannot die. Soul cannot die. Yes or no? And body often mixes with the earth, but that can be true in case of soul. Body mixes with in earth. Sariro matre mixi jaye, but atma amar rahe. Then quote the line which means death is not a goal of life. Quote the line which means death is not the ultimate goal of life. The line which means death is not the goal of life, grave is not its goal. Grave is not its goal. Next question achi, what attitude does the poet challenge in the first two stanza? Is the attitude of the poet positive or negative? First stanza रे कवि जो challenge करिसंती attitude को सेटा positive attitude को challenge करिसंती कि negative attitude को challenge करिसंती. The poet has challenged the negative attitude. The poet has challenged the negative attitude. Negative attitude को challenge करसंती. Positive केमती हला काना? तमे जदी कहउछ life is not and life is an empty dream. Things are not what they seem. तो ए बेला जदी कहउछ ताहाल तम भीतर negativeness अछि. मो जीवनटा नष्ट होई गेला बोली जने लोक कहउछि. ताहाल ता भीतर negativeness अछि. तो से negativeness टाको challenge करा जाई बेटा. Next question, dot the art to dot the written. This expression alludes to the Bible, and what are the other lines in the poem that makes an allusion to the Bible? Bible को refer करके कोटा लिखा है. बुझेला कि नहीं? First line रो कथा पढ़ देला काना. So the other lines in the poem that makes allusion to the Bible: art is long, time is fleeting, and our hearts though stout and brave, still like muffled drums are beating my masses to the grave. ये जो stanza वाला मैं कहली, this stanza has relation. So what does the poet say about the goal of life in stanza 3? Stanza 3 रे से जीवन और लक्ष्य विषय कौन कहछन्ते? Stanza 3. The poet says about the goal of life in stanza 3 that life is not unreal, it is serious. It is full of seriousness. Yes or no? And death is not the destiny of our life. Death is not the destiny of our life, and it is a part of our life. It is a part of our life. So the goal of life is to act and make our future better. Getting me? So the our aim of life should be to act and make our future better. So what is the poet's observation on art? Next question. What is the poet's observation on art? Art upare कविंकर धारणा कौन observation करछन्ते? So according to the poet, art is an everlasting value. Art is an everlasting value. The work of art is not temporary. The work of art is not temporary. It continues for a long period of time. It continues for a long period of time. Okay. So next question. Question number 10. Be a hero in the strife. Is it an inspiring call of the poet? What are the things on the poet urges us to do?
Is it an inspiring call? कभी हमको इंस्पायर करूछंती कि we hero in the stripe? Yes, it is an inspiring call. Yes, it is an inspiring call. Of the poet, he urges us to be active, to follow great people, and not to behave like driven cattle or dumb people. Yes or no? Okay. Question number 11. 11 number question. Why does the poet prefer the present to past and future? कभी कहीं की present को prefer करछंती past एवं future थारो नहीं बोले. So the poet prefers present to past and future because a person has no control over future and past. So he lives in the present. That's why. Next question. Next question is, what do the lives of great men remind us? What do the lives of great men remind us? कौन मने पकई दिए आम जीवन? So the example of great men help a person to distress in various ways. To person in distress in various ways. विभिन्न प्रकारे ताको encourage करिता है. Okay, remind us to be brave, and they gave a footprint for us. Sorry. So what do the lives of great men remind us? The lives of great men remind us to be brave, and they give a footprint, an example for us to follow them. We can make our life sublime, kana? Yes. How do the example of great men help a person in distress? Next question. How do the example of great men help a person in distress? दुखर थिला बेले किभली help करे? ये जो प्रश्न रहिला. The example of a great man help a person in distress in various ways. It makes them, laborious and perfect in life. So ये थिला आगुटे question अछि, भलो question. जोडा माने exam regarding question मो से गुडा आलोचना करछि. आगुटे 17 number question अछि. What is the tone of the poem? Inspiring or despairing? दुखदायी बा माने encouraging. So the tone of the poem is inspiring according to the poet. It is an inspiring poem. माने प्रेरणा देला बळे एको कविता. ये थिला I think सब प्रश्न उत्तर. So that's all. आसंता काली आ गुटे चैप्टर को चैप्टर आलोचना करबा. जो चैप्टर भी तुम कहि परबो सेही चैप्टर मु नेकी आसीबा आसंता काली. तार क्वेश्चन आंसर तार प्रोबेबल पैसेज सब आलोचना करबा. See you there. Stay tuned, Master of English. जय जगन्नाथ. 8 बेले.